नमस्ते एन्ड अ भेरी गुड मर्निङ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ स्पेस 4K टेलिभिजन। यो हो स्पेस संवाद। हरेक दिन बिहान 7:30 बजे आउने यो बिहानी कार्यक्रम स्पेस संवादमा हामी विविध क्षेत्रमा लागि पर्नुभएका व्यक्तित्वहरूसँगको अन्तरङ्ग कुराकानी यहाँहरूमाझ राख्ने गर्दछौँ। आज पनि मसँग एकजना अतिथि हुनुहुन्छ। वेल टुडे आई हेभ एन इन्टरनेसनल गेस्ट हियर इन माई एपिसोड अफ स्पेस संवाद र उहाँको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउनु पर्दा लेट मी इन्ट्रोड्युस हर टु यु। शी इज मिसेस इन्डिया। उहाँ कस्मेटोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ, उहाँ सोशल प्लान्ट एनिमल एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ, इन्टरनेसनल रेकर्ड होल्डर पनि हुनुहुन्छ, एक्ट्रेस पनि हुनुहुन्छ र आफ्नो कल्चर प्रमोट गर्दै पनि हुनुहुन्छ उहाँ। सो उहाँको एकदमै यो मल्टी टास्किङको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ आजको स्पेस संवादमा। पहिले त स्वागत गर्न चाहे हाम्रो आजको अतिथि रुना शर्माजीलाई। नमस्ते। नमस्कार, वन्दे मातरम। I would like to welcome you in Space Sambad. Thank you so much, ma'am. So first of all, I heard that this is your first time to Nepal. Yes, I have first time. Okay, we would like to welcome you, ma'am. Thank you so much. So how is Nepal for you? I really feel really pretty, very cozy. The person is really like, very familiar. And it's like heaven. I really love it, enjoying it. So this is actually your first time? This is my first time. Okay, and how long have you been here? I'm staying 4 days only. 4 days, just for 4 days. 4 days. Okay. So we would like to thank you for giving your time to us in this show. Thank you. And we would love to hear about you. So first of all, ma'am, I would like to ask you. So you've become, a pageant lady. So you've won Mrs. India, and then you're also one of the awardee for Mrs. India International. Yes. So let's start with your journey. Like, how did you come into the pageant world? Okay. My base is India. And I used to stay in US also, Pune also, but I love my Chhattisgarh because I represent my Chhattisgarh, my India. And I am a cosmetologist by profession. As a hobby, I am working for some events, some organizing some pageants, and I'm an international record holder also. And especially I focus in social and culture activist. So this is really I feel very very, very happy and peaceful when I work for social things. So I'm really happy and glad, God made me for this maybe. How would you introduce yourself as a person rather than Mrs. India or cosmetologist, or let's not talk about the professional background right now. So how would you introduce yourself as Mrs. Runa Sharma? Yeah, see, I'm a very normal person. Of course, lady have a lot of options to do, और खासकर भारतीय वही महिला जो हमारी होती है उसके लिए बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे चैलेंज होते हैं करने के लिए. So I'm blessed, my family supporting me a lot, my parents first, my husband, my family, my in-laws, all are supporting me. As a person, I'm really happy to work for cosmetology, beauty expert, with social and animal activists. I love my culture, Indian culture, they're also I see in the Nepali culture, it's also tradition, and I really proud my culture, my tradition. So I always promote my Chhattisgarh culture, my Indian culture, and I work, I love to work with them. Okay, yeah. So let's talk about your culture, as you've mentioned to us, Chhattisgarh, you are promoting the culture in that aspect. So how did you come up with this idea? What motivated you to step forward to this? See, we was a MP actually. हमारा जो state था वो पहले MP था, फिर बाद में वो छत्तीसगढ़ बना. So छत्तीसगढ़ बनने के बाद वहाँ इतने सारे लोकेशन से घूमने के लिए, वहाँ के लोग बहुत, हम लोग people are very simple, very normal. और स्टेट में क्या नेचर्स बहुत अच्छा है हमारे यहाँ पे. जैसे जगदलपुर बोला जाता है, चित्रकूट कहा जाता है. तो चित्रकूट में नियाग्रा फॉल जैसा हमारे पास एक चित्रकूट में एक बहुत अच्छा फॉल है. और बहुत सारी ऐसी जगह है जो घूमने के लिए बहुत अच्छी है. हमारे यहाँ के नृत्य बहुत, डांसेस बहुत फेमस है. हमारे का फूडिंग बहुत फेमस है. राइस ऑफ बोल कहा जाता है, धान का कटोरा हमारे छत्तीसगढ़ को. और बहुत ही सिंपल, बहुत ही ट्रेडिशनल लोग होते हैं. एंड इंडियन कल्चर, और जैसे मैं यूएस रही हूँ, आई यूज्ड टू स्टे इन यूएस 3 to 5 years. सो मुझे हमेशा से बहुत टची रहा है कल्चर के. आई लव टू वेयर साड़ी, आई लव टू वेयर. और उसमें मुझे लगता है लोग एडवांस हो रहे हैं, टेक्निक चेंज हो रही हैं, बट अपना कल्चर, अपना बेस कभी नहीं भूलना चाहिए. सो यूएस में भी हमने छत्तीसगढ़ को और अपने भारत को बहुत प्रमोट किया है. सो आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ और मैं छत्तीसगढ़ में हुई हूँ. मैं छत्तीसगढ़ की बेटी हूँ, यूपी की बहू हूँ.
So I love my family, I love my culture, I love my India, of course. Okay. As you've already mentioned, it's a beautiful place for sure, and you are like proudly representing Chhattisgarh and promoting your culture. Like, if you have to introduce your place, what is special about Chhattisgarh? Chhattisgarh is a rice bowl. We have a variety of rices. Okay. Rice. And the scenario is also very good, like nature's is very nice. And especially in greenery, like, you know, forest is really beautiful in Chhattisgarh. Okay. Now, talking about your professional career, so you have mentioned to us that you are a beauty expert, cosmetologist. How did you come up to this profession? मैं जब छोटी सी थी तब से 15-16 इयर्स की थी तब से मैं ब्यूटी में काम कर रही हूँ. लाइक यू नो मेरी आंटी जो थी वो ब्यूटिशियन थी. तो जब मुझे यूएस जाना था तो मैंने सुना था कि बहुत महंगी रहती है चीज़ें जब हम थ्रेडिंग के लिए जाते हैं. यू नो वी आर यूजिंग आईब्रोज, फेशियल्स, वेरी एक्सपेंसिव. सो आई थॉट व्हाई नॉट आई स्टार्ट लाइक यू नो टू डू माई ओन वेज. सो आई स्टार्ट वर्क एट होम एंड थोड़ा सा प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिया. फिर यूएस जाके मैंने प्रॉपर एक ट्रेनिंग लेके वापस अपना सैलून स्टार्ट किया. एंड आई वाज वर्किंग लाइक एज अ थेरेपिस्ट आल्सो, बट स्पेशली आई वर्क फॉर आईब्रोज एंड टिंटिंग. Okay. Yeah, I used to work. And इंडिया वापस आने के बाद मैंने कॉस्मेटोलॉजी किया BLCC से, मास्टर्स ऑफ कॉस्मेटोलॉजी. Okay. And I start my salon in Raipur, Chhattisgarh. It was premium salon. And especially I work for like you know herbal things. Okay. हर्बल चीज़ों के साथ, नेचुरल चीज़ों के साथ हम बहुत ज़्यादा काम करते थे. बिकॉज यूएस में क्या होता था, जो प्रोडक्ट्स हमें यूएस में मिलता है 8 महीने वहाँ ठंड होती है, और इंडिया में आप समझ सकते हैं खासकर छत्तीसगढ़ में 8 महीने गर्मी होती है. सो थोड़ा सा हमने हर्बल और कॉस्मेटिक्स को मिक्स करके भी कुछ चीज़ें बनाई. जिनको पूरा हर्बल यूज़ करना था उनके लिए हर्बल. होम रेमेडीज़ में बहुत बताती थी कि कैसे, क्योंकि आप कितना भी केमिकल यूज़ करो और हर्बल नेचुरल चीज़ें नेचुरल होती हैं. Of course. सो नेचुरल के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे लाइक पपाया फेशियल, डिफरेंट टाइप ऑफ फेशियल, टर्मरिक फेशियल्स, लाइक यू नो हाउ कैन यूज लाइक हाउ कैन मेंटेन योर स्किन, योर हेयर, योर लाइक यू नो वे ऑफ सिटिंग एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. So as a hobby we work, like you know, and hobby, you know, if I'm doing very good, so as a profession I thought yes, it's really good for me. So I am a master's of cosmetology. Okay. And how many years or how long have you been working in this field? Maybe 10 years, 10 Okay. to 15 years almost. Okay, so over a decade already. Yeah. You're happy with your profession. I'm really happy, I'm blessed. Okay, let's talk about your Mrs. India journey. How was that for you? See, of course I thought and I'm thinking, and in future also every ladies want crown, like you know, हर औरत का सपना रहता है क्राउन पहनना. वो एज अ हाउस वाइफ रहे, होम मेकर रहे, कोई भी रहे, दे लव टू वेयर क्राउन. और जब आप थोड़ी मेहनत करते हो और पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ करते हो और आपको कोई चीज़ मिलती है, उसका टेस्ट, उसकी वैल्यू अलग रहती है. मेहनत के साथ साथ टाइमिंग का भी बहुत फ़र्क रहता है. आज मेरा टाइम है, मेरा एज है, उस चीज़ पे लगे रहना, मेहनत करना. उस समय मैंने नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है, यू नो. सो आई वॉज फर्स्ट मिस छत्तीसगढ़ जब हमारा स्टेट बना. Okay. सो आई वॉज फर्स्ट मिस छत्तीसगढ़. फिर मिसेस इंडिया ग्लैट्रिक्स मैंने किया, आई वॉज इन टॉप 10. उसके बाद मिसेस इंडिया बनी मैं 2009-10 में, 11-12 में. तो भी मतलब जर्नी वॉज रियली गुड. और मेरे साथ ये अच्छा रहा है हमेशा से कि मुझे बहुत अच्छे लोग ही मिले हैं शुरू से. सो बहुत ही नीट, बहुत ही क्लीन एंड क्राउन, लाइक यू नो, मतलब मुझे ये लगता है आपको भी क्राउन पहनना बहुत अच्छा, हर लेडीज़ का सपना होता है और हर औरत को सूट करता है. और वो डिजर्व करती हैं. ज़रूरी नहीं है आप पार्टिसिपेट करें तो ही. आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें करने की है. आप पहले डॉटर होती हैं, फिर वाइफ बनती हैं, लाइक यू नो, फिर ऐसे रिलेशन बनते जाते हैं. अपनी लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ें की है, तो क्राउन पहनना तो बहुत इम्पोर्टेंट है. Definitely, and it's a big thing, you know, especially after getting married and after having a family and responsibility, and then you took part in a pageant. And did you ever decide, like, did you ever plan to take part before, like, getting married in Miss India? Of course, because I done Miss Chhattisgarh, so I thought after that suddenly I married, like you know, my marriage is like love come arrange. So Miss title I can't use this, like you know, so I thought you know, I go for Mrs. India because I want to be a. और मेहनत किया और काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा. बिकॉज हमारे स्टेट में कुछ चीज़ों का मतलब ये था कि प्लेटफॉर्म्स उतने नहीं थे. लोग क्वालिटी बहुत है, बट क्वालिटी को प्लेटफॉर्म में उतारना थोड़ा सा टाइम लगता था. तो फिर उसके लिए मेहनत भी की और फैमिली का सपोर्ट बहुत रहा है. क्योंकि आप कुछ भी करें और आपकी फैमिली सपोर्टिंग नहीं है, आपके इन लॉज, आपके हस्बैंड, आपका बेटा, आपके बच्चे, परिवार हैप्पी नहीं है, तो आपको वो सक्सेस का मज़ा नहीं आएगा, आप इंजॉय नहीं कर पाओगे.
और प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हमने, लाइक यू नो फैमिली को फैमिली की तरह देखा, प्रोफेशन को प्रोफेशन की तरह देखा, हॉबी को हॉबी की तरह देखा। मुझे लगता है हर लेडी में ये क्वालिटी होती है, तो इट्स नॉट अ बिग डील for me, but I'm happy कि yes, I brought Mrs. India crown. Okay, so you've been a very positive about your family and their support towards what you are doing right now. Let's talk about your family at this time. So can you introduce your family to us? My husband, he is an IT software engineer, Manish Shatri, and I have a kid. He's a 17-year-old. He's a boy, and he's very supporting, and he's doing 11th standard study. Okay. Yeah, I have my in-laws, but they stay in village, but we are on and off going in village. Okay. And my parents are also there nearby my place in Chhattisgarh. So people are supporting me, my family, my friends, and I'm a blessed person. I feel like I don't need anything, but times comes and I achieve a lot of things. Of course, yeah. And journey is long, so you keep continuing learning in life. Now let's talk about you as a social plant animal activist. So you've in this field as well. So you've worked in this field. So how did that journey began to you? See, social things like I especially work for women empowerment, underprivileged kids, and animals. You can see in India, so we need to help them. So अच्छा लगता है उनको support करना, उनके लिए कुछ मदद करना, और ये अच्छी बात है कि blessings मिलती है. I have my NGO also. I'm a president and I'm a founder of Arna Foundation. तो कोई भी चीज़ आप टैग के साथ करते हैं तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म भी रहता है और सिस्टमैटिक रहता है. तो उसमें हम काम करते हैं, जैसे डॉग्स के लिए फूडिंग वगैरह करवाना, उनके ट्रीटमेंट्स करवाना, काऊ के लिए करना, और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट में हम लोग टीचिंग भी देते हैं, जैसे स्टिचिंग हो गया, या जो जिस तरीके से ब्यूटी से रिलेटेड हो गया, डिफरेंट टाइप की हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं. और कोई वी हैव अ एनजीओ, सो we don't work for only one thing. Whatever people needs, we can work. Like the needy people, especially poor person, needy person, जो उनको ज़रूरत होती है हम उस तरीके से उनकी मदद करते हैं. Okay, so basically Arna Foundation is working for the welfare of people and animals as well. We do camps, we do different type of events. I do beauty pageant also. I'm an organizer of Beauty Icon India, Icons of India. So especially we represent Indian culture and different culture also, because Nepal have a different culture, Odisha have a different culture. So in one platform we are organizing, people are coming, they're showing our culture, that food and anything. So 2 to 3 days we have events, we are promoting our things. You are an active working mother. So is there times that you've faced difficulties, or you felt like it's very challenging sometimes, and it happens, in any profession. So did you face anything like that? Yeah, a little bit, of course, if I'm saying no, I didn't use, I'm not used to. Yes, I have a little bit of problem, I used to, but automatic, family supporting, I'm always asking, I want to do this is the right time to do. If my family says yes, you have to move forward, you have to do, then I'll work. सो कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे किड्स के साथ कि भाई स्कूलिंग का टाइमिंग देखना पड़ता है, उनके एक्टिविटीज़ का देखना पड़ता है. बट आई एम ओनली वन किड एंड ही इज़ वेरी ही इज़ वेरी एक्टिव. ही वांट कि मामा यू डू समथिंग व्हाट एवर यू वांट. हमारी फैमिली में सबसे अच्छी चीज़ है मैम कि जिसको जो चीज़ करनी है वो प्रॉपर सिस्टमैटिक करे. कोई किसी के ऊपर ऐसे प्रेशर नहीं डालता, एक दूसरे के ऊपर किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं लगाता. So family बहुत flexible है, और we are 3 people to stay together. So my husband, my son and me. I have 2 dogs, German Shepherd, 2 turtles, some birds. So we are enjoying a lot. Yeah, and that matters the most, your family support, the surrounding that you have to work, and you being in a leadership role. And also talking about the awards, I also came to know that you've achieved national and international awards as an inspiring woman. So could you mention some of the awards that is very close to your heart? Yeah. First, of course, Miss Chhattisgarh, because the state was new, 2000. हमारा स्टेट बना था, मैं फर्स्ट मिस छत्तीसगढ़, तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होता है, प्राउड होता है. और उसके बाद फिर दादा साहब फाल्के अवार्ड मुझे मिला, सोशल एक्टिविस्ट, और एज अ जो मैंने एल्बम्स किया हुआ था. और उसके साथ साथ बहुत सारे हैं, मातृशक्ति अवार्ड हुआ हमारा,
और वुमेन एम्पावरमेंट, मानवता रत्न सम्मान, क्योंकि हम मानव सेवा के लिए, जानवरों के लिए या बाकी लोगों के लिए काम करते हैं, तो मानवता रत्न सम्मान इज़ वेरी वेरी लाइक टची फॉर मी। एंड स्पेशली अभी जो राज जी हमें जिस इवेंट के लिए बुलाए हैं, नेपाल आना हुआ है, एक्सीलेंस अवार्ड जो सोनी जी और राज जी कर रहे हैं, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप लोगों से मिलने का मौका मिला और नेपाल का कल्चर, नेपाल वालों से मिलने का मौका मिला। तो इवेंट्स के थ्रू एक लेसन मैं मतलब सीख रही हूँ कि एक अच्छे से एक बॉन्डिंग होती है, एक रिलेशन बनता है, काफ़ी कुछ आपको लाइफ में सीखने के लिए मिलता है। सो अवार्ड एक अप्रिसिएशन होता है कि आप जब काम करते हैं तो थोड़ा और हेल्दी और एनर्जेटिक हम फील करते हैं अपने आप को। Yes, and it definitely motivates you to move forward. Definitely. So you're here for a cause, so also for an event, and you're also getting another recognition. So what is it about? Like, why are you here in Nepal at this time? See, I am promoting, I represent my India, and especially in Chhattisgarh. और इंडिया से सिर्फ हम हैं जो अभी इसको रिप्रेजेंट करने आए हैं। सो थैंक यू राज जी इवेंट के लिए, जो इवन आपका चैनल जो हमें बुलाया, क्योंकि हमें अपनी बातें बोलने का मौका मिला, हमारा इंडियन का कल्चर बताने का मौका मिला, नेपाल को देखने का मौका मिला। और एक्सीलेंस अवार्ड इज़ लाइक रियली मोटिवेट मी more and more for my social things, my culture, and my like all things from India. So it's very happy to hear that, an active woman working in different fields, different profession. So it's a message and it's an inspiration to all of us out there, especially to the young people, young ladies who really wants to achieve big in life, dreaming big in life. You are a true example to all of us. Thank you so much. Let's talk more about what you're doing right now. Where are you investing your time at the moment? See, I maximum time like with my family, my animals, like as including this, I'm doing my events, my pageants, my social things, like and जो social things होती है उसमें आपको कहीं ना कहीं as a special guest, as a awardee, and as a social worker जाना पड़ता है, और कुछ ऑन फ्लोर काम करना पड़ता है, जिसमें क्लीनिंग हो गया आपका, टीचिंग हो गया। मैं ब्यूटी का जो है लाइक स्किन केयर, हेयर केयर, काफ़ी चीज़ें मतलब फ्री में हम लोगों को सिखाते हैं। हाइजेनिक होना, गुड टच, बैड टच, आपने देखा होगा कई बार बच्चों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है। तो उसके बाद सोशल थिंग्स में हम सब कुछ आ जाता है। तो जिस समय हमारे पास जो टाइम टेबल आता है आरना फाउंडेशन में कि आपको ये ट्रेनिंग देना है, तो वो ट्रेनिंग में भी हमारा समय जाता है। तो हम लोग ट्रेनिंग लाइक एक एरिया वाइज नहीं देते, कभी विलेज में देते हैं, कभी स्कूल में देते हैं। हम साइबर क्राइम पे काम करते हैं। हम छत्तीसगढ़ की, रायपुर की पुलिस के साथ, जिसमें साइबर में जितने क्राइम्स हो रहे हैं, फोटोग्राफ से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, उस चीज़ में लोगों को अवेयर करते हैं। तो पूरा टाइम फैमिली के साथ और साथ ही साथ सोशल चीज़ों के साथ और बाकी इवेंट्स में निकल जाता है, क्योंकि आप मिलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे लोगों से। So you're the founder of Arna Foundation, and you're also the managing director for Beauty Icon India. Yeah. So how is it difficult, like being in an organization in a leadership role? How do you manage with your schedule? How do you manage with the team work? See, my son is supporting me, especially. He's managed my timetable sometimes. He's like kids are very smart. They knows everything this time. So he taught me, Mama, how can you use social medias and all, because maximum things are going like digital. Thank you. The word. So बहुत सारी चीज़ें होती, टीम होती है हमारे पास। हमारे एक छत्तीसगढ़ महिला शक्ति संघ है, वो हमें बहुत सपोर्ट करता है। और हम जो इसमें काम करते हैं उसमें बहुत सारे फाउंडेशंस रहते हैं, जैसे मेरा साथी जनसेवा, एक फाउंडेशन में कम से कम 50 फाउंडेशन और रहते हैं। तो कोई फाउंडेशन किसी चीज़ में अच्छा कर रहा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा कर रहा है, तो हम जिससे जो चीज़ उठानी रहती है हम उससे वो चीज़ उठा के हेल्प करते हैं। सो इट्स लाइक अ टीम वर्क, एंड ऑफ कोर्स बिना टीम के आप सक्सेस नहीं पा सकते, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। सो सब मिलके करते हैं, और प्रॉपर एक शेड्यूल बनाया जाता है, कैंप्स के लिए बनाया जाता है। जैसे हम आई ट्रीटमेंट करते हैं, आई चेकअप करते हैं, हमने रिकॉर्ड उसी में बनाया हुआ है एक कि कम से कम टाइम में हमने वुमेन्स का जो है प्रॉपर चेकअप करवाया है, और जिनको नीड था उनको कुछ कुछ चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कहा जाता है। इवन आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, वीपी ऑफ AIPC, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस। Yeah, so political, like I involve also. Wow. So you are everywhere. Advisory. I'm everywhere. Okay, so how did that political journey begin for you? Political, I start like I was a NSUI student. Like when I'm in college, I start NSUI,
देन काफ़ी लंबा ब्रेक था, फिर अभी मुझे 1 साल हुआ है जिसमें मैं स्टेट एडवाइजरी हूँ बिकॉज ऑफ सोशल वर्क। सो स्टेट एडवाइजरी ऑफ AIPC एंड VP ऑफ AIPC, जिसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर रहे हैं। और अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है काफ़ी सारी चीज़ें कि किस तरीके से हमें लिंक्स अच्छे बनते हैं कि आप किस तरीके से लोगों से सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं जो वुमेन, उनको हेल्प करना, उनकी काउंसलिंग करना, तो वो सब चीज़ों में हम कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं। So you've been involved in many professions, so many sectors. Which one is your favorite if you have to choose? Of course, beauty, beauty and social things like social working. You enjoy what you're doing. Yes, beauty because I know the hair and skin, of course, and beauty doctors always like on market. It's like a hot cake. सबको डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है, सबको ब्यूटीफुल बनना है, तो ये चीज़ हम छोड़ नहीं सकते। और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट मुझे अच्छा लगता है कि हम समाज के लिए कुछ करें, क्योंकि आप अपने लिए कुछ भी कर लीजिए, वो मेंशन नहीं होता, आपके अंदर भी नहीं होता। जब आप लोगों से मिलते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, तो आपको एक हैप्पीनेस, एक पॉजिटिविटी और सुकून फील होता है। It gives you self-satisfaction. Actually, and that's the most important thing. Whatever you do, the main thing is you need to have that self-satisfaction. Definitely. To love your work, to enjoy life. Yes. So I don't want to miss this chance. I just want to get a piece of advice from you. Maybe like all the girls watching us right now. So being a beauty expert, so is there any piece of advice that you would like to share with the young girls and ladies, of course, who wants to always like stay fit in terms of their skin? So is there any advice that you could provide to us? See, स्किन की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, अपने फेस को ना बहुत ही ज़्यादा हार्शली यूज़ करते हैं या कोई प्रोडक्ट लगाते हैं, तो CTM, वी कॉल CTM, क्लीजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर, वो हर एक लेडी, हर एक जेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लींजिंग पहले आपने किया, टोनिंग किया, डिपेंड्स ऑन स्किन, लाइक टोनर्स में मेंशन रहता है कि कौन सी स्किन के लिए, क्लींजिंग में रहता है, वैसे ही मॉइस्चराइजर्स में रहता है। जो ड्राई स्किन रहती है उसको क्रीम की ज़रूरत होती है, बिकॉज थिक चीज़ें चाहिए, और जो ऑयली एक तो कॉम्बिनेशन है, उनको थोड़ा सा लाइट थिन टाइप की चीज़ें यूज़ होती है, जिसको हम मॉइस्चराइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो हमेशा क्लीजिंग टोनिंग करिए, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ मत करिए। जब भी आप कोई कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से रिमूव करिए, और हार्श प्रोडक्ट से अच्छा बेबी ऑयल से रिमूव कर सकते हैं, लाइक व्हाट वी कॉल द नेम ऑफ सम काइंड ऑफ जेल्स, या उससे आप अच्छे से मेकअप आप निकालिए। उसके बाद हल्का सा मसाज करके, और दिन में 2 बार फेस धोना अच्छा है। गर्मी में स्पेशली आप कोल्ड वाटर, चिल्ड वाटर को फेस पे यूज़ करिए। और कॉस्मेटिक्स थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जितना हो सके आप अच्छा खाइए। इंटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना भी अपने स्किन में केमिकल लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, जब तक आप हेल्दी फूड नहीं लेंगे, खूब सारा पानी नहीं पिएंगे, लेकिन इंटेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खास स्पेशली फॉर वुमेन, तो आप इंटेक्स खाना पीना अपना हेल्दी रखिए, टाइम टेबल एक रखिए, 45 मिनट्स अपनी बॉडी को दीजिए। भले आप योगा करो, एरोबिक्स करो, वॉक करो, बट अपनी बॉडी का थोड़ा सा केयर, स्पेशली लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको अलग अलग जर्नी से गुजरना पड़ता है, डॉटर, लाइक मॉम, सो हमारी बॉडी के साथ बहुत चेंजेस, हार्मोन्स बहुत चेंज होते हैं। So intake food is very very important, food and water. You need to balance that. Yes, of course. Thank you so much. We appreciate your tips. So what are your future plans and projects that's coming up? See, I have to do some camps because कुछ लोगों ने किसी लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम था बॉडी से रिलेटेड, तो उनके ट्रीटमेंट्स के लिए हमें कुछ कैंप्स करने हैं, जिसमें आई ट्रीटमेंट्स हो गया, बॉडी चेकअप्स हो गया। कई लेडीज़ ऐसी रहती, नीडी होती हैं, जिनको अपनी बीमारियां, अपनी चीज़ें बता नहीं सकती, बॉडी चेकअप हर किसी से नहीं करा सकती, तो स्पेशली लेडीज़ कैंप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो जाने के बाद कुछ ड्यूज़ हमारे लेडीज़ कैंप्स हैं, आई ट्रीटमेंट्स हैं, साथ ही साथ एनिमल्स के लिए वापस कुछ करना है, और क्लीनिंग वगैरह तो बहुत ज़रूरी होती है, लाइक बिकॉज जितने जल्दी साफ होती है उतने ज़्यादा ही गंदगी अभी फिर वापस आती है। और साथ ही साथ कोविड से हो गया, लाइक पॉल्यूशन के लिए बहुत कुछ करना है हमें, लाइक बिकॉज पॉल्यूटेड नहीं रहेगी तो आधी बीमारियां तो वैसे ही चली जाएंगी। काम बहुत सारे हैं, थोड़ा सा लाइक लग के करना पड़ेगा। Of course. We would like to wish you all the best for whatever you do for your future endeavors. And is there any message you would like to share with our viewers who's watching you right now? Anything that you would like to share? And you're just here for 4 days in Nepal. And I wish you safe travels back home. And is there any message that you would like to share with us? नेपाल के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे अभी 2 दिन हुए आए, आई रियली फील हैप्पी, एंड लोग बहुत अच्छे हैं। लड़कियों के लिए मैं कहना चाहूँगी कॉन्फिडेंट रहिए, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, शॉर्टकट मत अपनाइए, लाइक
कॉन्फिडेंट बहुत रहिए, शॉर्टकट कभी मत अपनाइए। शॉर्टकट लाइक एक होता है ना कि लड़कियां बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं, लड़के बहुत जल्दी किसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। लगे रहिए, मेहनत करिए, ईमानदारी से अपना टाइम टेबल बनाइए और सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और अगर एक फील्ड आप सक्सेस नहीं भी हो रहे हो तो यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। लाइफ बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे नए नए पन्ने दिखाती हैं क्या कि नो, तो उसको पलटना, उसको नए पन्ने को लिखना वो हमारा काम है। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हमेशा ऊंचा होना चाहिए। जब आप फील करो कि यू फील नर्वस, तो स्पेशली जिसको भी आप मानते हो, किसी भी गॉड को, उनसे 2 मिनट बात करो लाइक यू नो, और 45 मिनट्स अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दो। बॉडी अच्छी रहेगी, माइंड अच्छा रहेगा, हेल्दी चीज़ें रहेंगी, अच्छा लगेगा। लोगों की मदद करिए, आपको खुद को सुकून मिलेगा लाइक यू नो। So sweet of you. That's really a thoughtful message to all of us. Thank you, ma'am. And we are very, very thankful to you for your time. And it's a privilege to have you in our sets today. Thank you so much for being थैंक here. यू। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। Thank you, ma'am. दर्शकवृन्द, आजको स्पेस संवादमा हामीले कुराकानी गर्यौँ रुना शर्मा म्यामसँग, जो एक ब्युटी एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ, मिसेस इन्डिया पनि हुनुहुन्छ, ब्युटी पेजेन्ट पनि अर्गनाइज गर्दै आइरहनु भएको छ, एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ। वेल, उहाँको प्रोफाइलको बारेमा धेरै जानकारी लिने मौका पाइयो, तर हाफ एन आवरको टाइममा हामीले अब धेरै कुराकानी गर्न त सक्दैनौँ, तर जति कुराकानी गऱ्यौँ उहाँसँग धेरै टिप्स अनि धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पनि मिल्यो आजको एपिसोडमा। वेल, स्पेस संवादको समय आजको लागि भने यही नै सकिन्छ। अर्को साता नयाँ अतिथिका साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि म सोफियालाई पनि बिदा दिनुहोस्। शुभ दिन।